Welcome all of you and good evening. So last lecture we have seen the some properties of moving charges. Whenever they enter into the magnetic field, what happens and how the force acts on them and what is the nature of that force, what does that force depends upon and how that force acts as a centripetal force. All these things were discussed in last lecture. Let us revise the same once again. Here we have seen the concept of the force acting on a charge in the electric field first. So we have seen that whenever the charge is kept in an electric field, it experiences a force which is given by F is equal to Q into E, where Q stands for the charge and the E stands for electric intensity, right? And also we have seen whenever the same charge particle is kept in a magnetic field, no force acts on it. Why? Because it's not moving. The force acts on the particle in a magnetic field only when the particle is moving with some velocity. Maybe whatever velocity we can say, but it should be moving. It should not be at rest. If the particle is at rest in the magnetic field, then it will not experience any force due to the magnetic field. Remember, because its velocity is zero. Because this force experienced by the particle in magnetic field depends directly on the velocity of this particle here. So ये हमने देखा था last time. Or if suppose the particle is moving perpendicular to the magnetic field, then it experiences maximum force due to it, no doubt, which is given by this QVB, no doubt. But if the particle is not moving perpendicular, but it's moving at some angle to the magnetic field, suppose theta, then we have seen that this velocity of this particle can result into two components, one of which can be supposed to be v cos theta and the other one will be v sin theta. And precisely the perpendicular component plays a very important role in this case for finding the force acting on this magnetic field. So the force acting on the charged particle moving in magnetic field depends actually on this v perpendicular, that is the perpendicular velocity, and hence we have replaced it as v sine theta here, and that is multiplied by b. So we get that F is equal to q vb sine theta as a final expression for the force acting on a charged particle which is moving in a magnetic field, which can also be expressed in vector form like this. So this is the vector form of that formula, that is F is equal to q times of v bar cross b bar, where v bar is going to be the vector along which the velocity is there and b bar is going to be the vector along which the magnetic induction will be there, and the cross product of these two v bar and b bar is going to be the f bar, actually multiplied by q also. ओके तो ये हमको याद रखना है. अभी इसमें एक बात समझो कि it doesn't matter whether we resolve the velocity or magnetic induction. We can also resolve the magnetic induction here. For example, if suppose the particle is moving in some velocity with some velocity in this direction, suppose इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, but the magnetic field in the space here is going to be at some angle. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे तो इस एंगल पे है, मतलब इस डायरेक्शन में सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस स्पेस. These are the magnetic lines of force. ओके ऐसे रीजन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस एंगल पे या इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, और इस मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर वैल्यू हम थीटा बोल देते हैं, सॉरी बी बोल देते हैं, तो दिस मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी मेकिंग सम एंगल with the direction of velocity v here, right? Let us take it as theta, and in this case we can again consider the magnetic induction to be made up of two different components, one of which will be vertical and other one will be horizontal. That means one of them should be along x axis, along the velocity here. तो ये जो velocity के direction में एक component हमको मिलेगा
ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट जो मिलेगा हमको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में, देखो. So these are the two components of this magnetic induction, out of which we can call this component of magnetic induction along the velocity to be b cos theta. करेक्ट है, इसको हम b cos theta बोल सकते हैं. और दूसरा जो कंपोनेंट बनता है इसको हम b sin theta ऐसे डिनोट कर सकते हैं. तो अभी देखो कि the particle is moving at right angles to this b sin theta, right? If you consider this component at every point, if we resolve this magnetic induction in two components and consider this b sin theta component here, then this particle is going to cut this b sin theta component of magnetic induction at every point here, because it is moving in the horizontal direction with the velocity b. So we'll see that when the particle is cutting this component here, no doubt this particle is moving parallel to this magnetic induction component because theta. So no force will act on it due to this component here, but it will experience the force only due to the second component, that is b sin theta here. And that's why once again we are going to get the formula for the force, that is F is equal to Q into V into B के बदले क्या आएगा यहाँ पे, ये component उसका जो कि b sin theta यहाँ पे है. So if you replace it by that, then we get this b sin theta. So Q into V into b sin theta. Once again it becomes QVB into sin theta. But if suppose the particle is already moving at right angles to this magnetic field, then the formula reduces in this simple form, that is F is equal to QVB simply. And this is going to be the maximum force acting on the particle, which happens only when the velocity is perpendicular to the magnetic induction. Remember, so when the velocity is perpendicular to the magnetic induction, then and only maximum force acts on the particle in the magnetic field, and that maximum force is given by this formula here. Okay, and this force already we have seen last time that this force acts as a centripetal force which is necessary for the circular motion of this particle. Correct? So this force keeps the particle revolving in a circular motion continuously. If the particle enters into the magnetic field at some point, then it remains circulating in a circular motion forever. Okay? So far as it is in the magnetic field, it will continue to revolve in a circle of radius r, which is given by this formula. देखो यहाँ पे रेडियस जो r है वो हमने इस फॉर्मूला से निकाला था, और ये रेडियस निकालने के लिए भी फॉर्मूला कैसे बना हमको, तो एक तरफ है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और दूसरी तरफ है force due to the magnetic field on a particle moving in magnetic field का फॉर्मूला QVB. तो ये mv स्क्वायर अपॉन r और ये इस तरफ QVB जो है, इन दोनों को हमने इक्वेट किया. ये देखो, इसको अगर mv स्क्वायर के साथ अपॉन r के साथ इक्वेट करेंगे तो वेलोसिटी एक बार कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है सिंपली QB इज इक्वल टू mv अपॉन r, जिसको ही सिंप्लीफाई करके आगे सिंप्लीफाई करके हमको मिलता है r इज इक्वल टू mv upon qb. Correct है? And this is actually the formula for finding the radius of circular orbit in which the particle will revolve whenever it is projected with the velocity v inside a magnetic field of induction b, and obviously q is going to be the charge on the particle, no doubt. चलो ठीक है. So अभी यहाँ पे डिस्कस करने जैसे तीन सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं. सबसे पहला ये कि if suppose there is a magnetic field produced in this space here, तो इस स्पेस में सपोज कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, yes, and suppose that a charged particle having the charge q and mass m is just projected with the velocity v here. So suppose that a particle is projected in this direction here, and suppose that its velocity is going to be v. Okay, so what happens is it experiences a force due to this magnetic field. तो q इतना चार्ज पार्टिकल m मास वाला अगर हमने इस तरफ फायर किया तो उसका जो रेडियस है, what will be the radius of orbit of the particle? Obviously, so far as this particle is there in the magnetic field, it will revolve in a circular orbit. But as soon as it just escapes into the magnetic field, it will continue to revolve in the continue to move in the straight line. Remember,
जब तक ये पार्टिकल इस सर्कल मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब तक ही वो क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। वंस इट जस्ट एस्केप्स आउट, तो यहाँ से अगर वो एग्जिट करता है मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, उसके बाद the force due to magnetic field will no longer act on it, and in that case the particle will just move in the same direction in the straight line as it was moving in this direction here. तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा था, उसी डायरेक्शन में वो मोशन उसका कंटिन्यू करेगा आफ्टर रिवॉल्विंग इन अ सर्कल फॉर सम टाइम, so far as it was in the magnetic field. देखो, यहाँ से यहाँ तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, इसलिए इधर से इधर तक वो सर्कुलर मोशन में घूम गया, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो उसके बाद वापस स्ट्रेट लाइन से मूव करेगा, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल जस्ट गेट वैनिश्ड बिकॉज इट हैज एस्केप्ड आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड हियर। सो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। बट चलो ठीक है, जो अगर वो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। विच रेडियस, which will be the formula for radius of this circular motion of this particle here? तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना होगा? How we can find it out? Okay, suppose that we have this center. Suppose the particle revolves in a circle like this, and after this point, it will just escape from the magnetic field, and so it will just move in the straight line afterwards. Okay. So what is the radius of that circular orbit in which the particle revolves in? तो ये पार्टिकल जिस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होता है, उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है, तो वो कैसे निकालेंगे? सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट which is going to be r here. So it depends what velocity this particle is projected with. किस वेलोसिटी के साथ इस पार्टिकल को हमने अंदर प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर ये रेडियस डिपेंड करता है। Actually this radius is a very crucial factor. It's the dependent factor actually. Radius completely depends on the velocity, mass and charge of the particle. Okay, so radius is given by the formula mv upon qb, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, याद होगा आप सभी को, ठीक है ना? ये देखो इधर, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था कि नहीं, mv upon qb, this is the formula for radius which is obtained by just combining the equation for the force, that is qvb, with the equation for centripetal force, that is mv square upon r. Okay, so here we have seen that it is r becomes equal to mv upon qb. Okay, but we know already that this mv is actually called as the momentum, right? So if you put it as mv as momentum and it is denoted by p, then we can express this expression as r is equal to p upon qb. Correct hai? So this is again another important equation for the radius, no doubt. And at the same time, we can also see, if suppose we use the relationship between the momentum and kinetic energy. Do you know what is the relationship between the momentum and kinetic energy? We know that kinetic energy K is actually given by half mp square, correct hai? But as we know, if we multiply this by m, suppose, तो उसमें से हमको क्या
Yes, sorry for the disturbance. कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था एक मिनट के लिए. चलो ठीक है. So let us continue. Yes. Okay, so see here, this kinetic energy can be expressed as half mv square, and here can just multiply divided by m and get it as m square v square upon 2m, which can be written as mv the whole square upon 2m. But mv is, we know that it is p, right? So if we replace just by that in that, then we can get it as k is equal to p square upon 2m, correct? Hai? And then you can get it as p square is equal to 2 into m into k, correct? Hai? Where k stands for kinetic energy. So we can get the expression for p, that is equal to root of 2mk, right? And if we use this value of p here in this equation, then we get another equation for r, radius, that is r is equal to p के बदले आ जाएगा root of 2mk, right? 2mk upon qb, correct है? So this is going to be actually the equation for radius in terms of kinetic energy. This is in terms of momentum, and this is going to be in terms of the velocity here. Okay, तो देखो तीनों फॉर्म्स में हमने ये इक्वेशन एक्सप्रेस किया है. देखो ठीक से, one is in the form of velocity, the second is in the form of momentum, and the third one is in the form of kinetic energy. Okay, so if suppose it is given that the particle is enters, suppose with the velocity v, then we'll use this equation. If momentum is given, then we'll use this equation, and if suppose the kinetic energy is given, then we can use this equation so as to find out the radius. But sometimes the questions are asked to compare the radius of the particle whenever different particles are given. Suppose एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक सपोज हाइड्रोजन का आयन, मतलब हाइड्रोजन का आयन है, मतलब ही प्रोटॉन, चलो. और कभी हो सकता है कि देयर इज अ ड्यूटेरॉन आयन ना, ड्यूटेरॉन आयन. और कभी ट्रिटियम आयन भी हो सकता है, या हेलियम का न्यूक्लियस भी हो सकता है, मतलब ही अल्फा पार्टिकल. तो ये सारे जो अलग अलग पार्टिकल्स है, इनको अगर हम सपोज फायर करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, so they will travel with the different circles of different radii, barabar. So if you want to compare the radius of different particles which are thrown with the common velocity, okay, if it is given that the velocity of the particles is going to be the same, then radius, देखो ठीक से यहाँ पे, अगर velocity same होगा सभी का, तो उस केस में velocity actually किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, और वो भी इनवर्सली. देखो ठीक से, if v is constant here, v is suppose constant, then we can say that r will depend inversely on charge. What does it mean? Sorry, velocity constant होने से the radius will depend on the ratio of mass to charge, because normally magnetic induction in which all the particles are fired is going to be the same only. तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन कॉमन ही होता है, सेम ही होता है. तो एक ही मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने बहुत सारे पार्टिकल्स थ्रो किए, जिसमें से जिनका सबका वेलोसिटी सेम रखा, तो सेम स्पीड से अगर उसको उनको हमने थ्रो किया, तो उस केस में क्या होगा कि उनका जो रेडियस है वो ये मास टू चार्ज रेशियो डिसाइड करेगा. ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो. Actually, charge to mass ratio is also called as a specific charge. Okay, and this is just reciprocal of that. So we can understand that radius of the charge, radius of circular orbit, or radius of curvature of the path of the particle inside the magnetic field will be decided by the ratio of mass to charge when the velocity is constant. Okay. दूसरी बात ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि if the all particles are fired with the same momentum, suppose if it is given that the different particles are fired in with the same momentum, that means if p is going to be constant, right? तो अगर p constant है, तो उस केस में क्या होगा? We can say that this r will depend
इनवर्सली ऑन द चार्ज ओनली, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सारे पार्टिकल्स हमने कांस्टेंट मोमेंटम या सेम मोमेंटम के साथ अगर फायर किए, प्रोजेक्ट किए, तो उस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा जिसका चार्ज सबसे कम है, और उस पार्टिकल का रेडियस कम होगा जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है। तो मोर चार्ज लेस रेडियस, लेस चार्ज मोर रेडियस। लेकिन कब? जब सारे पार्टिकल्स को हमने सेम मोमेंटम के साथ फायर किया तब। लेकिन अगर हमने इन सभी पार्टिकल्स को अगर सेम वेलोसिटी के साथ अगर फायर किया, तो उस केस में मास भी मैटर करेगा। ठीक है, मास के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली, और चार्ज के ऊपर इनवर्सली। तो जिस पार्टिकल का मास टू चार्ज रेशियो सबसे ज्यादा है, उस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा, और जिस पार्टिकल का मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम है, तो उस पार्टिकल का रेडियस भी कम रहेगा। ये हमको समझना है अच्छी तरह से। एंड अल्टीमेटली तीसरा जो केस है, इफ सपोज ऑल द पार्टिकल्स आर फायर्ड इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी सपोज, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी हो गया। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, देन व्हाट द रेडियस विल डिपेंड अपॉन? The radius will depend directly on the square root of mass, and it will depend inversely on the charge simply. So that means the radius will depend on the ratio of root of mass to charge here. Or we can also say, अभी यहाँ पे जिसका root of m2q रेशियो ज्यादा होगा, उसका m2q स्क्वायर रेशियो भी तो ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए m बाई क्यू स्क्वायर, ये रेशियो भी हम कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इसका स्क्वायर ही है सिंपली। तो इसलिए जिसका m बाई क्यू स्क्वायर रेशियो या रूट m बाई क्यू रेशियो ज्यादा होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा, और जिसका रूट ऑफ m बाई क्यू रेशियो कम होगा, उसका रेडियस भी कम होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब, लेकिन ये सब कब होगा? जब पार्टिकल्स को हम सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ फायर करेंगे, तब ऐसा होगा। तो ये तीनों इक्वेशंस याद रखो ठीक से, ठीक है ना? एक पहले फिर हमने क्या डिस्कस किया, when the particles are fired with same velocity, then the radius depends on mass to charge ratio. When the particles are fired with same momentum, then the radius depends inversely on the charge, right? And when the particles are fired with the same kinetic energy, then the radius depends on the root of m to q ratio, remember, or m by q square ratio, ये भी बोल सकते हो। r depends on this ratio, ऐसा भी हम बोल सकते हैं बिल्कुल। ये जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तब याद रखेंगे ठीक से। ये तीनों सिचुएशंस अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि इनके ऊपर एमसीक्यूज पूछ रहे थे मोस्टली, ठीक है? और इसी के साथ एक ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है, ये हमको अच्छी तरह से याद रखनी है कि whenever the positive charge particle is thrown here, so the positive charge particle, उसके ऊपर अगर हम सपोज अप्लाई करेंगे हमारा राइट हैंड रूल, तो हमको क्या मिलेगा? उसका जो डायरेक्शन है वो एक तरफ मिलेगा राइट हैंड रूल से, बट व्हेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कंसीडर्ड, देन द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। सो रिमेंबर, अगर सपोज सेम सिचुएशन हम लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को हमने फायर किया सपोज, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। समझो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन दोनों को हमने सेम डायरेक्शन में फायर किया इस तरह से, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ हम इसको फायर करेंगे। यस, सो रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट कितना होगा वो निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, नो डाउट ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसमें प्रोटॉन का जो मास है या उसका चार्ज है या उसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो डाल के, और मैग्नेटिक इंडक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो डाल के हम रेडियस उसका निकाल ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हाउ विल यू गेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कल? तो देखो यहाँ पे ये प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमने इसमें फायर किया है। तो जब whenever these two charged particles are fired in the same magnetic field, what happens is the radius of orbit may be given by this formula, but what will be the direction of circular motion? कौन से डायरेक्शन में वो टर्न करेगा वो कैसे हमको पता चलेगा? उसके लिए हमको राइट हैंड रूल लगेगा। देखो ठीक से, if it is a positive charge, then we can say the right hand rule, if we use it here,
then we can get that if you curl our fingers of right hand from velocity vector to the magnetic induction vector, then we are going to get the upward direction, right? So this charged particle will just bend in the upward direction here. Okay, इस तरफ वो bend करेगा ये charged particle जो है. So positive charged particle will follow the right hand rule and bend in the upward direction, no doubt. But negative charged particle will not follow the right hand rule, but it will follow the opposite rule. तो अब राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन हमको मिलता है अपवर्ड वाला, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल आल्सो रिवॉल्व इन द सर्कल, बट लाइक दिस. तो ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज सर्कल में वो घूमता रहेगा. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, ठीक है? तो सर्कुलर ऑर्बिट, इफ सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूज हियर फर्दर, यहाँ पे और आगे जाके अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू हो जाता है तो उसमें हम देख सकते हैं आराम से, और इवन ऊपर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू होता है, ये चार्ज पार्टिकल का भी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे ये सब, तो हम देख सकते हैं कि जिस सर्कल में ये पार्टिकल्स घूमेंगे तो वो सर्कल्स रेडियस भले अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, बट वी कैन सी द circle in which this particle will revolve will be suppose somewhat like this, and the circle in which this second particle revolves will be suppose somewhat like this, and the most important thing to note here that this particle will continue to revolve in this direction here. ये डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करेगा जिसको कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, करेक्ट है? बट एट द सेम टाइम दिस अनदर पार्टिकल हियर, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है तो वो एक्चुअली एक दूसरे डायरेक्शन में घूमेगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा. देखो तो ठीक से. So this particle will just revolve in the direction which is called as the clockwise direction here in this way. तो इस clockwise direction में वो घूमेगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है. तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल will revolve in this clockwise direction and the positive charge particle will revolve in the anti-clockwise direction. But when the magnetic field is inwards, देखो यहाँ पे ये magnetic field inwards है इसलिए ऐसा हो रहा है. But if suppose the magnetic field will be outwards, then the results will be opposite. So yeah, we can understand everything happens according to the right hand rule. Okay, so positive charge particle follows right hand rule, whereas negative charge particle follows the opposite result of right hand rule. तो right hand rule obey नहीं करता. right hand rule से जो हमको आंसर मिलता है उसका opposite direction में force वो उसके ऊपर काम करेगा. ठीक है? Okay, now we'll understand what happens when a particle is moving in a electric as well as magnetic field. So we know that the electric force, the force acting on this particle due to electric field is given by Q into E, correct hai? No doubt. And at the same time, the magnetic force, the force due to magnetic field acting on a particle moving in magnetic field is given by FB, which is actually equal to Q into V into B, correct है? इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से. तो दिस इज अ वेक्टर एक्चुअली, एंड दिस एक्चुअली इज गोइंग टू बी द क्रॉस प्रोडक्ट of B bar and B bar, no doubt. So this is actually the force, and here also we can write it in the vector form E bar और यहाँ पे F bar. Okay. And now whenever the particle is moving in the combined magnetic as well as electric field, then the path of the particle will be such that the net force acting on the particle will actually be the vector sum of these two forces acting on it. So F net we can say will actually be Fe bar plus Fb bar. Remember correctly, this is the formula for net force acting on the particle, right? And here this net force
finally can be given by simply Fe, which is going to be Q times of E, correct hai? Here it is going to be Q times of E plus Q V bar cross B bar, correct hai? So here it is Q times of V bar cross B bar, yes. And here we can see clearly, note carefully here that this addition, ये जो addition यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये वाला, this is not a normal addition, but it's going to be a vector addition. Remember, for example, if suppose Q E bar, ये जो F E bar है, वो अगर suppose इस direction में रहेगा, किधर हो भी, और suppose, चलो इसको हम suppose F E bar बोल देते हैं, yes, and this is a vector actually, and suppose that another force which is going to be acting on this particle in this direction, suppose, which is FB bar, okay, तो ये FB bar है suppose यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the net force acting on this particle will actually be directed along the diagonal formed by these two vectors, that is FE bar and FB bar, okay. So this will be given by the net force acting on the particle, okay, which will be denoted by F net actually. So here you have to understand correctly that whenever the particle is moving in a crossed magnetic and electric field, then in that case we have that the particle obeys the vector addition rule. तो ये जो vector addition से जो ये फॉर्मूला हमको मिलता है, ये vector addition हमको करना पड़ेगा, तब जाके हमको इसका जो नेट फोर्स है वो हमको मिल पाएगा, ओके। तो ये याद रखो ठीक से। Okay, yes, and actually this formula is actually called as the formula for Lorentz force, okay. This force is actually called as Lorentz force, which is the force acting on a charged particle whenever it is moving in a combined electric as well as magnetic field, is called as the Lorentz force, and it is given by this formula. For example, if suppose a charged particle, if suppose electron or any charged particle, suppose it's moving in the horizontal direction here, ये इस horizontal direction में ये charged particle move कर रहा है, ठीक है, with the velocity v suppose, okay, and at the same time इस region में, जिस region में ये particle जा रहा है, तो उस region में suppose एक electric field भी है और magnetic field भी है. Suppose the electric field is spread out in this region in which the electron is going to enter or this charged particle is going to enter, okay. तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल एंटर करने जा रहा है इस रीजन में, तो इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी बनाया हुआ है. सपोज दिस इज द there is suppose a positive plate and a negative plate. ये सपोज यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाया गया है. एंड सपोज दैट अपर प्लेट इज सपोज पॉजिटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है, या इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, ऐसा बोल सकते हैं, यस. And at the same time, this plate is connected to a negative terminal so that there will be a negative charge formed on this another plate here, okay, due to which we have a strong electric field produced here which is going to be directed downwards, okay. ये downward direction में जो है ये electric field यहाँ पे produce हुआ है.
Yes, these are the electric lines of force which are directed in the downward direction. Okay. Yes, and at the same time, suppose there is a magnetic field also produced in the space between these two plates. मतलब यहाँ पे इस इन plates में यहाँ पे एक magnetic field भी produce करके रखा है, which will be expressed by the crosses here. ये जो क्रॉस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उसका मतलब ही क्या है? There is going to be a magnetic field which is directed inwards into the plane of this figure. Okay, तो ये है magnetic field whose magnetic induction will be given by B bar, suppose. Okay, see here, the magnetic field is expressed as B bar and it is directed inwards, right? And the electric field is expressed as E bar, which is directed downwards. Okay, okay. So now, whenever this particle will enter into this crossed electric and magnetic field, देखो ठीक से ये तीनों जो है ना वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ठीक से? देखो कैसे? The velocity of the particle is in the horizontal direction. You can see clearly. Yes, this is the direction of velocity of the particle here. Okay, तो इसको हम बोल देंगे v bar, which is directed horizontally. Okay, and at the same time, the magnetic field will be directed inwards, right? And the electric field will be directed downwards. So electric field can be shown to be downward in this way. इसको हम बोल देंगे E bar, चलेगा? तो देखो ये E bar हो गया हमारा. Yes, and magnetic field will be directed inwards into this. So this will be the magnetic field. We can call it as B bar. So this is your B bar. So basically this is the triplet. You can see all of these three are just at right angles to each other in this way. You can see ये तीनों जो है वो एक दूसरे को right angles पे है. So hence we can see that the particle will experience a force in the downward direction due to the electric field, but due to the magnetic field it will experience a force in the upward direction. So Fe is downwards and Fb is going to be upwards. So if we want to make these two forces cancel each other, then we'll have to apply the condition Fe is equal to Fb, where Fe is going to be equal to Q into E and Fb is actually equal to QVB. So that Q gets cancelled from both sides and we are left with E is equal to V into B, which gives P is equal to E upon B, which is nothing but the formula for velocity. Whenever the particle or charged particle is moving in a crossed electric and magnetic field, we can find out its velocity just by taking the ratio of intensity to magnetic induction. And here the particle will be moving with the velocity and it will not deflect it. It will not get deflected either upwards or downwards. It will just pass undeviated through this magnetic as well as electric field. Remember, okay. So this is a simple situation and we can obtain this formula and use it further. Okay, so this is all about the topics we have to discuss today. Okay, so the next topic जो है इसका आगे का पार्ट हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, अभी अब तक जो हमने सीखा उसके अंदर अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. Okay, so let us end this lecture. Thank you all of you.